Mechanical waves are those waves which needs the medium for their movement, for their propagation. And for example, sound waves and waves on the surface of the water and so on. And these waves can be of two types: transverse, which are produced in the surface of the water or in the tight string in which particles oscillate up and down, and wave moves perpendicular to the direction of oscillation of particle. In other words, longitudinal waves in which particles of the medium, they oscillate along the direction of motion of wave. For example, sound waves. This we did, and we have also seen equation of the wave, plane progressive harmonic wave, that is called displacement equation, displacement relation in a progressive wave, which is given by y is equal to a sine omega t plus minus kx plus phi, or it can be kx plus minus omega t plus minus phi. तो ये इक्वेशन होती है ना, a the amplitude, k the propagation constant, k क्या है propagation constant, which is also called wave number, omega the angular frequency of the source and angular frequency of each particle of the medium also. जिस frequency से source oscillate करेगा, देखिए जिस frequency से source oscillate करेगा ये वाला ब्लॉक, उसी frequency से ये वाला particle भी oscillate करेगा. This is the particle of medium and here is the source. Source की जो frequency है वही particles of medium की frequency होगी. Otherwise it will break from here. अगर ये rope अपनी frequency से oscillate कर रही है, block अपनी frequency से अलग अलग, तो यहाँ से break हो जाएगा फिर वो. Since both are connected, source is oscillating with the same frequency, particles of medium will oscillate. तो जो source की frequency होगी वही medium के particle की frequency होगी. ठीक है. And t is the time, y the displacement. अगर प्लस है बीच में दोनों के तो it is going in negative x direction. अगर माइनस है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है वेव. That's what we have seen. Wavelength also we have defined. It can be distance between two consecutive crests or trough, or distance between two rarefactions or compressions, or it can be minimum distance between 2 points having the same phase. Having the same phase means they are vibrating in same direction. Suppose water, suppose ये rope है, ये वाला particle और ये वाला particle same phase. If this is going up, this will also be going up. That is the meaning of same phase. Suppose ये particle है, now it will go down. So this वाला corresponding particle will be this. This will also go down. तो same phase का मतलब ये होता है, एक जैसे बोलेंगे pendulums are oscillating in same phase, मतलब they are oscillating together. और आगे पीछे pendulum oscillate होंगे तो क्या बोलेंगे, out of phase है. They are out of phase. एक साथ oscillate करते तो in phase, same phase or in phase. Same phase means they are oscillating together, both are going up together, both are reaching to the peak value together, both are going to the down together. That is what is the same phase or no phase difference. And also wavelength can also be defined by the distance covered by the disturbance in one time period of oscillator. एक oscillator पूरा जितने एक time period है उतने में डिस्टर्बेंस कितना आगे चला गया, वन वेवलेंथ आगे चला जाएगा. ये हाफ ऑसिलेशन, सपोज ये ब्लॉक ऊपर जाके नीचे आया तो आधी वेव बनेगी बस. फिर ये नीचे जाएगा, ये वाली वेव आगे चली जाएगी है ना, जैसे ये, फिर ऐसे ब्लॉक ऊपर आएगा तो ये वाला पल्स बाद में बनेगी, ये पहले बनेगी ऐसे, क्योंकि ब्लॉक के साथ कनेक्टेड है. Are you getting me or not? This जैसे ये ब्लॉक है. Yes sir. कहाँ गया, जब आपने ब्लॉक को नीचे पुश किया तो पल्स ऐसे बनेगी. वो पल्स अभी यहाँ पहुंच गई, फिर ये ब्लॉक ऊपर से जब नीचे आएगा तब ये एक और पल्स बन जाएगी. पल्स मीन्स हाफ वेव, वी कैन से हाफ वे कैन बी कॉल्ड पल्स.
तो इस तरह से ये ऊपर और नीचे पल्स बनती रहती है। अगर ये कंटिन्यू कर रहा है तो ये गेट कंटिन्यूअस वेव्स विच इज कॉल्ड वेव ट्रेन। आधी पल्स इतना रहता है ना, उसको पल्स बोलते हैं। अगर ब्लॉक ने एक एक हाफ ऑसिलेशन किया और रुक गया, यहाँ पे रोक दिया आपने, तो एक पल्स हाफ पल्स बनेगी, वही आगे जाए चली जाएगी धीरे धीरे। गॉट इट? तो लाइक दिस थिंग्स हैपन। साउंड में भी पार्टिकल एयर पार्टिकल ऑसिलेट करके अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करते आगे, एंड नेक्स्ट पर्सन के पास जब ऑसिलेशन पहुंचता है तो ही कैन हियर द साउंड। तो लाइक दिस, तो इक्वेशन मिल गई। दिस विल रिप्रेजेंट ऑल द वेव्स। ये जो इक्वेशन है, दिस और दिस बोथ आर सेम, will represent sound wave also, waves in the string also, light wave also, magnetic wave also, electrical wave also, alternating current also। alternating current में भी ऐसे, of course alternating current में SHM सिंगल, उसमें सिंगल सोर्स है, तो अल्टरनेटिंग करंट में SHM का A sin ओमेगा t से काम चल जाता है। वेव नहीं है वो, उसको हम बोल सकते हैं कि that simple harmonic motion is doing, current or voltage is doing simple harmonic motion। We'll see in AC current how do we use this in C, 12th में देखेंगे वो। But this wave will represent all the situations, sound wave also, light wave also, sound में भी, mechanical wave में भी, this waves in the string also के लिए भी सेम इक्वेशन होगी, और साउंड वेव के लिए भी सेम इक्वेशन कैन बी यूज्ड। ऑलराइट, सिंगल इक्वेशन कैन बी यूज्ड फॉर एनी काइंड ऑफ वेव। तो वेवलेंथ वाज डन। एंगुलर वेव नंबर, के सिंबल है, that is angular wave number, that is 2 pi by lambda, and k is also called propagation constant। Unit will be per meter or radian per meter। What will be dimension of k? K का dimension क्या होगा? m0 l minus 1 t0। लेंथ की डायमेंशन है इसमें, मीटर इनवर्स, लेंथ इनवर्स। ऑलराइट, Yes, sir. okay, so here up to here we did it। Now we'll see what is next। This question, solved example, this you can do your own, we are doing the exercise question। उससे पहले we'll let us discuss some more point, then we'll do the question। Let's do the wave speed। What speed wave moves in the medium? Wave will move with the constant speed in the particular medium, and speed of wave is given by distance traveled by the disturbance divided by time। So when time interval is capital T, distance covered will be lambda। यही तो definition है। wavelength की definition क्या है? Distance covered by disturbance in one time period of oscillator। oscillator का जो एक time period है, उस समय disturbance एक wavelength cover कर लेगा, यहाँ तक पहुंच जाएगा, that is lambda। तो lambda टाइम कितना लगा? कैपिटल T, lambda by T, but 1 by T is called frequency। टाइम पीरियड इज फ्रीक्वेंसी, जिसको न्यू भी लिखते हैं। तो इसको न्यू लैम्डा हो जाएगा, v इक्वल टू न्यू लैम्डा हो जाएगा, या फिर f लिख रहे हैं तो हम लोग f लिखेंगे, f लैम्डा, है ना। तो v इज इक्वल टू f लैम्डा, विच इज द वेव स्पीड इज द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव एंड वेवलेंथ ऑफ द वेव। फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ को जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो व्हाट डू वी गेट? इज कॉल्ड द स्पीड ऑफ वेव इन दैट मीडियम, एंड v इज कांस्टेंट। v is constant in the medium, you know। medium जब तक change नहीं होगा तब speed change नहीं होती। this v is constant in the medium। suppose sound wave है, air में जा रही है, suppose for example 3 meter 350 meter per second, तो air में constant रहेगी unless you change the temperature।
तो कांस्टेंट वाटर में उसकी अगर स्पीड 1500 मीटर पर सेकेंड है तो उतनी रहेगी, है ना, अनलेस यू चेंज द टेम्परेचर। तो दिस इज कांस्टेंट, है ना। इट मींस व्हाट, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाई आपने तो जल्दी जल्दी ऑसिलेट किया तो वेवलेंथ कम हो जाएगा, प्रोडक्ट विल बी वी, है ना। सपोज इफ यू ऑसिलेट फास्ट, यहाँ से आपने रोप को पकड़ा हुआ है, जल्दी जल्दी ऑसिलेट कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, एंड यू आर नॉट चेंजिंग द टेंशन एंड ऑल अदर फैक्टर्स नहीं चेंज कर रहे, फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे तो वेवलेंथ कम हो जाएगा, प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। वेव अपनी स्पीड से जो रोप में ट्रेवल करेंगी वो चेंज नहीं होगा जब तक टेंशन चेंज नहीं करते। ऑफ कोर्स विल सी व्हाट आर द अदर फैक्टर्स। यहाँ पे हमने क्या डेरिवेशन निकाला, v is equal to f lambda frequency into wavelength. This relation is valid for light wave also, not only sound wave. लाइट वेव के लिए सिंबल हम थोड़ा चेंज कर सकते हैं, लाइट वेव के लिए स्पीड ऑफ लाइट c सिंबल लिखते हैं, यू कैन राइट v also, nobody will object, है ना। तो it is valid for light wave also, sound wave also, valid for the waves in the rope also, tight rope में भी जो वेव बना रहे हैं हम लोग, उसके लिए भी वैलिड है सब जगह, ठीक है। एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इज कांस्टेंट इवन इफ वेव चेंजेस द मीडियम। अगर ये वेव सपोज पानी में चली गई, वाटर के अंदर चली गई या कोई और मीडियम में चली गई, सपोज थोड़ी देर के लिए ज़ूम कर, ये साउंड वेव है। आपको साउंड वेव में ऐसे along oscillation will be along that, imagine करो this is the say light wave है, light wave with the transverse wave, it enters into the water, so frequency remains constant, even sound wave also, for all the waves frequency of wave remains constant even if wave changes medium, because it depends upon the oscillation of oscillator. oscillator या source कितनी frequency से oscillate कर रहा है उस पर depend कर रही हो, ठीक है। Got it? Frequency will not change with the change of the medium of the wave. एक medium से दूसरे medium में wave चली गई, then also frequency will not change. It means what? Speed change हो जाएगी, speed change होगी तो wavelength change हो जाएगा। साउंड वेव पानी में जाती है तो स्पीड बढ़ जाती है उसकी, तो वेवलेंथ भी बढ़ जाता है। लाइट वेव पानी में जाती है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है तो वेवलेंथ भी कम हो जाती है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती। गेटिंग और नॉट? Yes, sir. Okay, so this much is you have to remember because this thing you need in the 12th standard also. ये रिलेशन आपको आगे भी काम आने वाला है। Now that wave speed is also given by omega by k. Omega is the angular frequency, k the propagation constant. इसको प्रूव कर सकते हैं हम। देखिए राइट हैंड साइड ले लेते हैं, उसको हम v के बराबर प्रूव कर देते हैं। ओमेगा क्या होता है? 2 पाई f, लेट मी राइट विद द ब्लू इंक। राइट हैंड साइड ले लिया हमने, इट इज एक मिनट 2 पाई f डिवाइड बाई k। k क्या होता है? 2 पाई बाई लैम्डा होता है। 2 पाई गेटिंग कैंसल्ड, it is becoming f into lambda. F into lambda is nothing but a v, that is left hand side. Got it? Just brief derivation. So if you know the omega, if you know the value of k, divide them, what you get is called the speed of light, speed of wave, sorry. Clear? All right. Yes, sir. Note down, these are the very important points. Manage our test. SHM का टेस्ट ड्यू है मंडे or Tuesday? Sir, please could you keep it on Tuesday as Monday I have a test in school.
Okay. Okay, Tuesday. And you don't have the class tomorrow and day after tomorrow. Physics class, you can prepare for the test, SHM ka test. So physics class, next class will be on Monday after today's class. All right? Okay, sir. Okay, sir. Okay. ठीक है, you can utilize the time for preparation of that chapter. All right. Moving further. Let's see that I think the makers are there. चलो देखिए आपका important है ये for competitive examination as well as your term test. This question is important. Okay. Let's see what is this. Transverse harmonic wave on a string is described by this relation. Okay, can you see it? Where x and y are in centimeter. सेंटीमीटर में दिए तो अपना आंसर भी फिर बाद में कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में, इसको पहले कैलकुलेट कर लेंगे. t is in seconds, no problem. The positive direction of x is from left to right. जनरली जो होता है, if the wave or stationary wave, if this equation belongs to the traveling wave, yes, because we have seen such equation omega. This is the equation of sort of y is equal to a sin omega t plus kx plus phi. ऐसी इक्वेशन है. Such equation represents the traveling wave, progressive wave. Traveling का मतलब progressive, which is moving forward. And stationary waves we will be seeing after this. उसकी इक्वेशन में यहाँ पे into आ जाता है, प्लस नहीं होता है उसमें. टर्म्स जो है ब्रेक हो जाते हैं. ओमेगा टी एक के साथ ओमेगा टी एंड के एक्स के टर्म ब्रेक हो जाते हैं. तो विल सी स्टेशनरी वेव लेटर, बट दिस वी नो इज द ट्रेवलिंग वेव. क्या आंसर होगा? ट्रेवलिंग. और प्रोग्रेसिव वेव, बोथ आर सेम है ना. ओके, इफ इट इज ट्रेवलिंग, व्हाट आर द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन? डायरेक्शन बताओ किधर होगा? बाय सीइंग द आर्गुमेंट ऑफ साइन फंक्शन can we tell the direction? दोनों टर्म प्लस के हैं, देखो ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस है बीच में, दोनों के बीच में प्लस है तो किधर जाती है? निगेटिव की तरफ, नेगेटिव एक्स की तरफ, along negative x direction. Got it? Yes, sir. Yes, sir. और क्या निकालना है? क्या निकालना है इसमें? What else we have to find out? The wave speed निकालनी. तो वेव स्पीड हम निकाल सकते हैं ओमेगा बाई के. अभी हमने पढ़ा था v is equal to ओमेगा बाई के, या एफ लैम्डा से भी निकाल सकते हैं, whichever is convenient. ओमेगा बाई के इज कन्वीनियंट. तो ओमेगा क्या होगा? देखो ये तो आपका a हो जाएगा. t का कोएफिशिएंट क्या होता है? ओमेगा होता है. और x का कोएफिशिएंट क्या होता है? k होता है. तो वी कैन से फ्रॉम द इक्वेशन वी कैन राइट ओमेगा इज 36. यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ ब्रैकेट के बाहर कुछ कॉमन तो नहीं लिया. कभी कभी वो ब्रैकेट से बाहर पाए बाहर लिख देते हैं यहाँ पर. तो पहले अंदर मल्टीप्लाई कर लो पाए को, या जो भी है अंदर मल्टीप्लाई कर लो, फिर आप कंपेयर करो. दिस विल बी ओमेगा. यहाँ पे चेक करना पड़ता है. साइन के जो ब्रैकेट है ना, उससे बाहर कॉमन लेके तो कुछ नहीं लिखा है. तो यू हैव टू बी केयरफुल. तो यहाँ पे आउटसाइड इज 1 ओनली, तो इट मींस होल थिंग इज ओमेगा. एंड यहाँ पे होल थिंग इज के 0.018. ठीक है. तो v इज इक्वल टू ओमेगा बाई के. ओमेगा 36, के 0.018. इसको डेसिमल हटा सकते हैं ना, 10 to the power 3 हो जाएगा, -3 हो जाएगा. तो ये 2 टाइम्स, तो ये 2000 ऊपर 10 to the power -3 ऊपर जाएगा तो 2000 सेंटीमीटर पर सेकंड और मीटर पर सेकंड. सिंस के इज गिवन इन सेंटीमीटर, so it will be सेंटीमीटर पर सेकंड. तो 100 से डिवाइड कर दो, हाँ, तो कितना आ जाएगा? 20 मीटर पर सेकंड इज द स्पीड. ऑलराइट, क्लियर? हाउ डिड वी गेट, कुड यू गेट दिस? Yes, sir. तो दिस इज इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट.
काफी बार कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में दे आस्क ओनली v. So this is the easy way to get the velocity, fast way to get. Frequency and frequency and lambda निकालने में टाइम लगता है. So this is the easier method to get it fast and save the time. All right, यहाँ तक ठीक है? Any problem up till now? तो B part करेंगे अभी, if you don't have the problem. We'll do the B part and C part also. B part के लिए देखो, एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी. एम्पलीट्यूड तो ये एम्पलीट्यूड बताओ क्या होगा? Sir, 3. बोलो. मीटर और सेंटीमीटर. Sir, 3 3 centimeters. सेंटीमीटर. बिकॉज यहाँ पे उन्होंने लिख दिया ये सेंटीमीटर्स में है, एक्स एंड वाई. अगर वाई सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में होगा. तो इसको Yes. मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं. 3 इंटू 10⁻², -2, सॉरी. तो ऐसे लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम. नाउ फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? हाउ टू गेट द फ्रीक्वेंसी? टेल मी फास्ट. ओमेगा है अपने पास, फ्रीक्वेंसी मिल जाती है. सिंस ओमेगा इज इक्वल टू 36, ओमेगा हमने कैसे निकाला? कंपेयर करके. इस इक्वेशन को हम किससे कंपेयर कर रहे हैं? ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस फाइव, इससे कंपेयर कर रहे हैं. तो टी का कोएफिशिएंट ओमेगा है विच इज 36 मिल गया. तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी कैसे मिलेगी? आर यू देयर? Yes, sir. इज देयर एनी इशू? Yes. ओके, ठीक है. ऑलराइट. तो ओमेगा इज कैन बी रिटन एज व्हाट? ठीक है, टर्म में ओमेगा लिख सकते हैं. ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी. तो क्या लिखेंगे बोलिए? 2 पाई एफ 36. Yes, sir. तो f is equal to 36 by 2 pi. 2 pi is 6 point something. So 36 divided by 6.28. 5 point something will come. कितना आंसर है? Let me see. 5.7 hertz. 5.7 hertz. Got it? Yes, sir. Now, what is the initial phase at origin? तो ये देखो कैसे. इनिशियल फेज मैंने बताया व्हेन x is 0, t is 0. अच्छा, ओरिजिन पे पूछा है ना, तो ओरिजिन पे x is equal to 0. इनिशियल का मतलब t is also 0. कौन सा पार्ट है Yes. ये? सी. तो एट ओरिजिन x is equal to 0 and initial means t is equal to 0 and at t and at t is equal to 0. तो ये होल थिंग इज कॉल्ड फेज है ना, पूरा टर्म फेज हो जाता है. तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, बचेगा क्या? π/4. उसी को तो इनिशियल फेज बोलते हैं. फेज फाइव इज इक्वल टू π/4 बचेगा. डायरेक्टली लिख सकते हैं. इनिशियल फेज इज 5 which is π/4. Sir. Yeah. Sir, can you please explain the phase concept once again? Phase concept is coming further also. Phase is, देखो, phase, ये पूरे टर्म को फेज बोला जाता है. टर्म ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस फाइव इज कॉल्ड फेज, which is the argument of sine function or cosine function, and it phase means it is related to angle. ये angle होगा. It indicates the position of particle at various time t. फेज का अगर लिखना है तो यहाँ पे यू कैन राइट. फेज का हमने वहां पे जो लिखा था ना, एक मिनट, फेज हमने कहाँ पे लिखा था? वहीं पे हम एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं. वेयर इज द फेज रिटन? यहाँ पे क्या फेज होल्ड है. दिस क्वांटिटी, होल क्वांटिटी appearing as argument of sine function in the equation is called phase of the wave. Its unit is radian. Its unit is radian, and it indicates position of
particle of medium at various times at time t कर दो, at time t. Time will change, it will also change at time t. t पर पार्टिकल कहाँ होगा, मिड पोजीशन पे है या ऊपर है या नीचे है ना, और ठीक है, तो लाइक दिस we can add from our side. समझने के लिए लिखा है, but this much is okay. This I have added from my side. Got it? तो जैसे आगे भी आएगा फेज डिफरेंस वगैरह, क्लियर? जैसे एसएचएम Yes, में sir. था ना, एसएचएम में क्या टर्म था, ये था साइन ओमेगा टी प्लस 5, होल थिंग वाज द फेज. तो फेज वहां पर भी ये डेफिनेशन रहेगी, फेज इज द आर्गुमेंट ऑफ साइन फंक्शन एंड इट इंडिकेट्स द पोजीशन ऑफ ऑसिलेटिंग पार्टिकल एट टाइम टी. टाइम टी पर कहाँ पे है, मीन पोजीशन पे है या ऊपर है या लोएस्ट पॉइंट पे, एंड सो ऑन. तो फेज इंडिकेट द पोजीशन ऑफ ऑसिलेटिंग पार्टिकल एट वेरियस टाइम्स टी. गॉट इट? Yes, sir. और what is remaining here now, what is the least distance between two successive crests in the wave? How to do the fourth part? D कैसे करेंगे बोलो, who will tell? बोलिए. What to find out? In fact, क्या क्या निकालना क्या है इसमें लास्ट पार्ट में? Sir, the distance between two successive crests will be the wavelength. Yes, wavelength पूछा है. Indirectly they want us to find out the lambda. Lambda की ये definition है, one of the definition is this also. लैम्डा निकलना है. तो लैम्डा किससे निकलता है, के से. सिंस के इक्वल टू 0.018 पर सेंटीमीटर होगा, तो सेंटीमीटर में आ जाएगा. लैम्डा की वैल्यू बाद में मीटर में कर दो. एंड के इज नथिंग बट 2 पाई बाय लैम्डा. 0.018, that is lambda is equal to 2 pi divided by 0.018 सेंटीमीटर में, है ना. तो कितना आ रहा बाय द वे, ये डेसिमल हटाया और 1000 ऊपर लिखा, है ना. तो सॉल्व करने से ये लगभग ये 6 है और ये 3, कम से कम ये इट विल बी कमिंग 300 के आसपास, तो सेंटीमीटर में, है ना. तो मीटर में 3, है ना, क्लोज टू 3 के आसपास 3.5 आ रहा है. 350 सेंटीमीटर आ जाएगा वो, इट विल बी 3.5. रफ आइडिया जस्ट मैंने लगाया, पूरा सॉल्व कर लो आप. दिस विल बी कमिंग 350 सेंटीमीटर्स, दैट विल बी 3.5 मीटर, क्लोज टू दैट वैल्यू. इट मे नॉट बी एग्जैक्टली 351 भी आ सकता है, 349 भी आ सकता है. गॉट इट? Yes, sir. तो ऑल पार्ट्स आर इम्पोर्टेंट. यू शुड नो होल क्वेश्चन जो भी पूछा है, यू शुड बी कंफर्टेबली, यू शुड बी एबल टू डू इट. करना क्या है, सिंपली कंपेयर कर लेना है इस क्वेश्चन के साथ. ओमेगा मिल जाएगा, के मिल जाएगा. ओमेगा से हमें फ्रीक्वेंसी मिलती, के से लैम्डा मिलता. गॉट इट? एंड स्पीड निकालनी है. अगर आप एक चेक कर सकते हैं, देखो यहाँ से आपके पास लैम्डा भी है और फ्रीक्वेंसी भी है, तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा से निकालेंगे 3.5 और ये कितना है 5.7. तो it will be close to 20 सेंटीमीटर 20 मीटर पर सेकेंड, which is nothing but this. हमने पहले ही निकाल दिया है, v is equal to 20 के आसपास आ रहा है. इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करो, it will be close to 20 मीटर पर सेकेंड. Got it? So you have the other method to check whether your answer is right or wrong. Sir. Yes. Sir, in 10th standard when we studied sound, there was this relation between, we obviously have the relation between wavelength and frequency, but sir, there was also one with amplitude. Sir, is there any, or? Amplitude deals with the loudness level. Yes, Amplitude sir. के साथ क्या है? Amplitude. So we'll be just coming to that points also धीरे-धीरे.
Okay, sir. जोर से जब बात करते हैं, when we shout, तो air Yes, sir. particles oscillate with the larger amplitude. But frequency Yes, sir. doesn't change. Frequency, in fact, we don't have the, when we talk, we don't have the single frequency. It is combination of frequencies that Yes, sir. depend upon person to person. Generally, that doesn't change. Yes, sir. No, sir, Because but like, is हम there any like mathematical? relations are ahead, आगे है relations कुछ और. You can Okay, sir. see that, है ना? One Yes. experiment is generally shown. Wave speed जो है, as I told you, wave speed is the depending upon the medium. Can you change the medium around your? Can you change the medium of your sound? Medium generally जो है, we are inhaling and exhaling air. But if you inhale some other gas which should not be dangerous to the body, in that case, you when you talk, you can feel the change in your sound. Speed change होती है, wavelength change होता है, तो उससे sound की quality change होती है. You can experience that, है ना? So we can see the demo if possible. If somebody inhales some other gas and then he talk, is how the quality of sound changes. We can see that. If video is available, I'll show you. Yes, sir. Sir, I think there was one with helium balloons. Inhale helium balloons, and then it comes in a different voice. Helium is different atomic number, mass number than air. So things, speed of sound changes, and therefore quality of sound also Yes, sir. different. So we can see that if available, it is available. I'll show you. Walter Lewin का है lecture. Have you heard the name Yes, Walter sir. Lewin? Yes, sir, a He's lot. MIT professor, retired MIT professor. Yes, sir. He showed that inhaling the gas, other gas, and how the sound quality of sound changes. We can discuss that if available. Okay, चलो आगे देखें. Yes, sir. Anything else? Now we are going to see phase difference. What is the meaning of phase difference? थोड़ा सा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको. Suppose ये दो पेंडुलम ले लीजिए आप. अगर दोनों की लेंथ सेम है and you leave them, so they will be oscillating together. अगर इसकी लेंथ छोटी कर दो, तो this will oscillate fast and this will oscillate slow. तो लेकिन एक साथ अगर छोड़ेंगे ना, तो this will be out of phase with this. आगे पीछे oscillate करेंगे. That's what is the meaning of phase difference. If the two particles of medium are not oscillating together, they are said to be out of phase. They are not in phase. They have the phase difference. Phase difference का symbol क्या होगा? Phi or delta phi. Let's see tentative definition. Definitions are not written in book, but we can write our own definition. Let's see what is this. If two particles of medium are vibrating together, are said to be in phase. Otherwise, they have the phase difference. And phase difference is measured in radian because it is somewhat related to angle only. है ना? Phi हमने देखा sin का argument, part of the argument, part of the phase only है ना? Argument जो है phi. तो phase difference is denoted by delta phi r phi. Phi हम initial phase के लिए भी यूज करते हैं, but phase difference के लिए भी यूज कर सकते हैं, है ना? दो पार्टिकल कि आगे पीछे ऑसिलेट हो रहे हैं, पेंडुलम के लिए भी हम यूज कर सकते हैं. पेंडुलम इज नॉट द वेव. Oscillation of pendulum is simple harmonic motion. It is not the wave, but we can say the phase difference के बारे में. We can discuss the phase difference. If they are oscillating, they are not oscillating together. दो जो टाइम डिफरेंस है उसको हम फेज डिफरेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं. ऑलराइट, लोकेशन डिफरेंस को भी फेज डिफरेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो इट मींस two particles of medium are not oscillating together. They are oscillating one behind other. So they have the phase difference. And how to get the phase difference? फेज डिफरेंस कैसे निकालते हैं उसका फार्मूला सीखेंगे. ठीक है, समझ में आया कुछ फेज डिफरेंस का मीनिंग? मतलब इतना ही है. नॉट ऑसिलेटिंग टुगेदर मींस दे आर हैविंग फेज डिफरेंस. उसको हम उनकी लोकेशन देखकर हम बोल सकते हैं कितनी एंगल का उनका फेज डिफरेंस है.
कितने रेडियन का फेज डिफरेंस है। गॉट इट? Yes, sir. तो इट डिपेंड्स अपॉन द पाथ डिफरेंस। सपोज ये वाटर है ना, what I mean ये वेव है, सपोज वेव्स इन द रोप, पार्टिकल यहाँ पर और एक यहाँ पर, दिस पार्टिकल विल कम डाउन, दिस पार्टिकल में गो अप और मे कम डाउन। तो इन दोनों का जो डिस्टेंस है, एक पार्टिकल यहाँ पर एक यहाँ पर है ना, रोप में, वो ऑसिलेटिंग रोप में है ना, तो ये जो उनका जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, पाथ डिफरेंस।